फायरसाइड चैट का यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में किसको ज्यादा पसंद करते हैं आप? मुझे लगता है कि इनका परिचय देने की किसी को जरूरत नहीं है। फिर भी दीपक पारेख साहब का जो परिचय है अपने आप में, एचडीएफसी ग्रुप का चेयरमैन होने का जो एक अपने आप में बहुत विशाल व्यक्तित्व है, जो आपका अपने आप में पर्सोना है, वो बहुत बड़ा है। ग्लोबल हॉरिजॉन पे लोग आपको जानते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि दीपक पारेख साहब का फायरसाइड चैट करने का मुझे मौका मिला है। और आपके पास वक्त की बेहद कमी है और हमने भी आपसे बहुत ज़्यादा समय ले लिया है। इससे बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन में ना जाते हुए सीधे आपसे मैं सवाल करूँगा। पहला तो पारेख साहब, जो मेरे जहन में एक सवाल आता है कि इंडस्ट्री में कोई बहुत बेबाकी से बोलता है तो दीपक पारेख बोलते हैं, तो कभी आपको चिंता नहीं होती? You have to speak what you feel. And I've always followed that. And you must be fearless. And चिंता तो होती है, but सच बोलने का इरादा होता है. तभी some people don't like it when you give a criticism. But that is normal in industry. In fact, even in the earlier government, we used to have 5 or 6 of us used to have a letter in the newspaper, letter to the Prime Minister Manmohan Singh, and we used to write in that what is needed to be done in the country, what improvements are needed, and so you have to speak the truth. Chinta to hoti hai, but if your conscience is clear and you have nothing to hide, then there is no issue of fearing about it. दूसरा जो सवाल है कि आप 77 की एज में हैं। लोग इंडिया की जो एक अपनी एक सोच है, लोग 75 को रिटायरमेंट की एज बना देते हैं। तो दीपक पारेख 77 की एज में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर कर रहे हैं। जैसे कि मुझे पता है आपको क्रिकेट का बहुत शौक है, तो दीपक पारेख मतलब जैसे कोई गेंद हो, बॉल हो, उसको बाउंड्री के बाहर आप पहुंचा दे रहे हैं। तो इसका सीक्रेट क्या है? आप इतने एनर्जेटिक रहते हैं। जैसे एक आपके कलीग हैं नवनीत मनोट जी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ हैं, उनका एक सवाल है कि वो कहते भी हैं कि मेरे जो बॉस हैं पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और यंग हैं। तो 77 की एज में इतनी आपकी जो एनर्जी है, जो एक्टिविटी है, इसका क्या सीक्रेट है? अभी जो what we announced now, a merger between HDFC and Limited and the bank, I am jobless now. So now I can watch all cricket games all over the world. And that is what I'm going to do. Energy to aati hai. You feel tired, but you have to continue. The next day you have to start working again, and the next day you have to start working again, and hope better days are ahead. And we have seen, in fact, I would love to see your book, the book you have released about our achievements over the last 75 years and what we expect. The better 25 years are yet to come. I feel that the next 20 will be even much, much better than what we have seen in the past. And India will become a developed economy. India's GDP will multiply. And I have always said this recently, that I've never been as optimistic about the future of our country as I am today. You live in Mumbai. Mumbai में आप रहते हैं. So what do you like the most about Mumbai? I can't stay anywhere else in the world other than Mumbai. I've grown up here. I went to school here. I went to college here. I went for a few years abroad and came back. And I've never regretted that. And I'm delighted to see now many youngsters coming back because they see better potential, more growth prospects. And in the past, you saw Indian students who went to US or UK never came back, didn't want to come back. Now there's a stream of students coming back to their own country and willing to contribute for the prosperity and growth of our country, which is a tremendous sign. And which should it be? It should be that. And because there are opportunities, because there is potential, because they can make a better living and have a better life in India than what they do abroad, what they can have. And this is one of the positives of this government, that Indian students are returning back willingly.
and not because you don't have a green card or a visa or something. On their own, they are coming back. सर जैसे हम सोचते हैं कि किसी दीपक पारेख को अगर एक पूरा दिन फ्री मिल जाए तो दीपक पारेख क्या करेंगे? रानी क्रिकेट मैच देखूंगा, ब्रिज खेलूंगा और सुडोकू करूंगा. अगर आप सुडोकू करने की जरूरत है because you have to keep your mind active. And every night before I sleep, I do the most difficult sudokus because you have to keep your mind alert, and it keeps your mind alert. अगर दीपक पारेख इतने बड़े फाइनेंशियल लीडर ना होते तो आप क्या होते? हम आपका जैसा मैगजीन तो नहीं चला सकते, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, नेटवर्किंग इतना नहीं है. तो मुझे साइंस में तो कुछ समझ में नहीं आता था, इंजीनियर बनने का सवाल नहीं था, मेडिसिन का भी सोचा नहीं था, फैमिली में कोई मेडिसिन नहीं किया है. सो द ओनली सब्जेक्ट लेफ्ट वाज कॉमर्स, एंड कॉमर्स के बाद सब सीए करते हैं, तो हमने भी सीए कर लिया. दैट्स व्हाई द लाइफ वेंट ऑन. आपके एक फ्रेंड है हरीश मेहता जो नैसकॉम के फाउंडर, आज उनका एक सवाल मेरे पास, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया और उन्होंने बोला कि दीपक भाई से एक क्वेश्चन जरूर करना कि इंडिया ने जो 75 ईयर्स की जर्नी अपनी अब तक तय की है, तो बहुत चैलेंजेस थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी, हम यहाँ पर आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि दीपक पारेख क्या सोचते हैं इंडिया की जो अगली 25 ईयर्स की जर्नी होगी, इंडिया एट 100 की जब हम बात करते हैं, जैसा आपने भी एक इंटरव्यू में कहा कि इतनी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग इंडिया की आपने नहीं देखी. तो अगर अब आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग, तो आप इंडिया को क्या समझते हैं कि इंडिया एट 100 बहुत डेवलप्ड नेशन हम बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? तो क्यों नहीं बन सकते हैं? नहीं, where there is a will, there is a way, and today there is a will with the government, with the entrepreneurs, with the industries, and with the youth of our country. The youth of our country is our biggest strength. And you know what previous speakers Nadir talked about, the demographic dividend. We have yet to see our demographic dividend, and you will see it in the next 25 years. And honestly, you take any sector, we live here, so we criticize the government or the pace of growth. But people who come to India after 2-3 years, they really see what changes are there. And look at the infrastructure in our own city. Give 2 to 3 years, you will have a brand new coastal road in operation. You will have the Mumbai Navasheva road, which will cut across. You can go to Pune in half the time. You have the metro, which will be ready. In 3 years' time, these 3 mega projects will be on stream. Mumbai will be a different city. Even today, if you see, at BKC, there is a new bridge MMRDA is built to Wadala. Now, Wadala to BKC, where is the heart of the commercial population, is working 8 minutes. 8 minutes by two-wheeler or a car. Earlier, it used to take 45 minutes. Just one bridge has made that difference. So the amount of effort the state governments have made, present, previous, all of them contributed, will change the way Mumbaikars live. And, we have to set example for the other states also, and we are setting that example. So I'm very optimistic that our city will become more livable. It will be easier to commute, travel, and even you see BEST buses are now electric vehicles. And all new EBST buses are going to be electric vehicles. Look at the amount of thrust, encouragement, incentive the central government is given for 2 things. One is renewables, and the other the electric vehicles. This is the future. Because we import oil, 85% of our imports are in crude. How do you substitute that? With electric vehicles and with renewables. Take the sun and the wind, and that will create power for you. So we are absolutely on the right track to see glorious 25 years ahead. एक सवाल शैलेश हरवक्ती जिसे मैंने मॉर्निंग में बात की, वो कल आपकी किताब ही पढ़ रहे थे जो आपने लिखी है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक सवाल आप पूछिए दीपक भाई से कि आप जो अपनी कंपनी के लिए फंड मैनेजर्स को चूज करते हैं तो बहुत पिकी होते हैं और उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका आपकी कंपनी को बहुत अच्छी ग्रोथ दिलाने में. तो ऐसा आप क्या देखते हैं कि जो आपकी कंपनी के अलग अलग डायमेंशन पे सक्सेस मिल रहे हैं?
I don't take that. I don't take more than 20 minutes to interview a person. I don't believe in giving psychology tests and asking them to do a case study and all the modern methods. Intuition. The best form of recruitment is intuition. You see a person, you chat with him or her with 15, 20, 25 minutes, and you come to the conclusion that will he contribute, will she contribute. And it's the gut feeling, it's the intuition which is really necessary to have in recruitment. सर दो छोटे छोटे सवाल और I wanted to say that this Lifetime Achievement Award, I was going to pass it over to Sailesh Haribhakti. He has been such a remarkable individual in our city. He's a well-known chartered accountant, and the amount of time he has contributed to different social organizations, Chambers of Commerce, Indian Merchants Chamber, all these CII, all these ASSOCHAM, and he's done remarkable work. And I'm sitting here because I learnt my first accounting from his well-known father. Vishnu Haribhakti was my professor. He taught me accounts, and I should really give the award to Sailesh to go and give it to him, his father. Because of him, we are what we are today. And honestly, he was one of the best accounts teachers that we had in Sydenham College when we were growing up. विष्णु भाई हरिभक्ति की मतलब तारीफ, मतलब उद्योग जगत कई लोग हैं जो उनसे पढ़े हैं. निरंजन हिरानंदानी जी मुझे मिले को बोले कि मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते थे. दो और सवाल हैं छोटे छोटे, क्योंकि आपके पास समय की कमी है. एक सवाल जो कि हर आदमी आपसे बहुत बिजनेस की बात करता होगा, डेटा की बात करता होगा, आंकड़े की बात करता होगा, लेकिन मैं दीपक पारेख की जो व्यक्तिगत जिंदगी है, मतलब जिसको हम सब समझना चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना आपकी लाइफ की हो जिससे दीपक पारेख को बदल के रख दिया हो. I don't think so that there's any event in my life which has changed me. I don't. Positively? No, I don't see that. Maybe joining HDFC, Pradeep was there, and Pradeep Shah was the first person in HDFC, and I was working for a foreign bank, and Mr. H.D. Parekh said, don't keep going abroad and working, and live here and work. So that was a changing of pattern of my life. Otherwise, one wouldn't know where one would be today. सर एक अंतिम सवाल ये है कि जैसे पिछले हफ्ते नादिर गोदरेज साहब ने एक इंटरव्यू दिया एक अखबार को. इंटरव्यू के पोएम दे नहीं, इंटरव्यू भी था, पोएम में चार पैराग्राफ का. पोएम के साथ इंटरव्यू. तो पोएम के बिना तो उनका इंटरव्यू अधूरा है. नहीं होते. तो एजीएम भी वो पोएम से करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग. तो नादिर भाई जैसा आप जानते, हम सब जानते हैं, बहुत ओपनली बोलते हैं. तो मैं आज क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम कर रहा था, तो मैंने सोचा कि नादिर भाई और दीपक भाई तो इस मामले में एक इक्विवेलेंट हैं, और आप भी बहुत बेबाकी से बोलते हैं. एक ऐसा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंडिया के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी को आप किस तरह देखते हैं जब भारत 75 सालों के दहलीज पर खड़ा है? No, Honorable Prime Minister has done a remarkable job. His only interest in life is to see India grow. His only interest to see India progress. And he spends all his time seeing that happens. He has built an excellent relationship internationally with many countries. And I think we need him for 1-2 more terms because he'll be able to change the face of our country. सर किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए अपोजिशन और गवर्नमेंट दो बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस होते हैं. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि असली फायरसाइड चैट का यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में किसको ज्यादा पसंद करते हैं आप? इसमें आंसर की जरूरत नहीं होती है, ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी. दीपक पारेख साहब को मैंने इतना कुछ सोचते हुए नहीं देखा. आपने 4 सेकंड लिया सोचने में, तो ऐसा क्या था आप जो सोचने लगे कि मैं क्या आंसर दूं? नहीं, सोचने की सवाल ही नहीं है ये. इट वाज ऑब्वियस. आपको लगता है अपोजिशन को और मजबूत होने की जरूरत है ताकि डेमोक्रेटिक सेटअप मेंटेन रहे? हाँ, डेमोक्रेसी नीड्स ऑपोजिशन, but today we have no strong opposition, but opposition will come, and democracy to survive needs an opposition. तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक पारेख साहब, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया. ओ हमारा अवार्ड शैलेश को दे देना प्लीज. ये तो अब शैलेश भाई डिसाइड करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सर.